We have a young boy, he's just 16 years old. He's had about 7 or 8 sessions of treatment before for his hemangioma at a different hospital in India, but he's still having major issues. I'm going to show you his lesion first, and then we're going to tell you how we're going to take care of this. Beta मुंह खोलो. First thing is you're going to see the lesion. जी दिखाइए. So look at that lesion. That's extending all the way till the base of the tongue. That's the base of the tongue. That's the throat now. So the tongue goes to the throat. That's extending all the way. I'm going to pull the lesion out for you. You can see that. That's probably 12 centimeters in length and about 4 or 6 centimeters in width. And you can see if I'm pressing, it's becoming small. If I leave, it gets bigger. That's one on the tongue. Now we move on to the one on the lip. This is slightly lower flow than the one on the tongue. But as you see inside the cheek, there you see, you have huge lesions again. This is also probably about 8 to 10 centimeters in length, extending all the way up to the ear on this side and all the way to the neck and the throat. So the lesion extending from here to there to here and onto the throat. It's a pretty large lesion, but the good thing is it's not that high flow now, especially the one on the cheek and the one on the lips. And there are small nodules here. थोड़ा आपको टच करने में फील होता है ना, उसको प्लीबोलिथ बोलते हैं, मतलब पत्थर की तरह खून का बना हुआ, उसको बोलते हैं प्लीबोलिथ. वो भी निकाला देंगे. वहाँ इसके पास आपको दर्द होता कभी नहीं? ठीक है, मुंह बंद करो. चलो देखो अभी प्रोसीजर क्या है, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, फिर आपको कब सर्जरी करना है उसके अनुसार हम प्लान कर सकते हैं. सर्जरी कर सकते हैं. सर्जरी के बाद आपको कम से कम 10 दिन यहाँ रहना होगा हमारे हॉस्पिटल के पास. और जब भी आपको सर्जरी करना है उसके पहले मेरे को एक MRI एंजियोग्राफी लेना है, एक CT स्कैन लेना है, 2 स्कैन. एक हमारे यहाँ हो जाएगा, एक आपको बाहर जाके लेके आना है. बस दिट्स ऑल. फिर हम रेडी करेंगे ब्लड इसके लिए और प्रोसेस. ब्लड तो रेडी करना पड़ेगा, हम जनरली रेडी करते हैं 2-3 यूनिट ब्लड. और फिर आपको प्लान बताएंगे और फिर सर्जरी का डेट करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे, फिर ICU में रहेंगे 1-2 दिन, फिर पूरा बैंडेज रहेगा, फिर इनका मॉनिटरिंग होगा, लाइट होगा. ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे बिकॉज मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, और मतलब लिक्विड डाइट होगा, फर्स्ट IV फ्लूइड होगा, ये सब रहेगा. 10 दिन के बाद ये सॉफ्ट डाइट खा पाएंगे, लिक्विड डाइट खा पाएंगे और ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा. 10-12-13 दिन के बाद आप जा पाओगे घर. लेकिन पूरा रिजल्ट आने के लिए आपको तुरंत मालूम पड़ेगा. रिजल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको देखेंगे, तुरंत मिल जाएगा. लेकिन और भी श्रिंक होगा, तो 6 मंथ तक श्रिंक होते 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 आपको 90% तक नॉर्मल हो सकता है. कभी कभार 100% भी हो जाएगा. अगर समझो 1 ईयर के बाद या 9 मंथ के बाद बहुत रिजल्ट अच्छा रहेगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा. फिर भी अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा है कुछ या थोड़ा सूजन है, वो भी बाद में देख सकते हैं. जितना कि बाद में इनको कुछ भी स्कार नहीं रहेगा और बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इनका इतना प्रॉब्लम था. सर टंग का जो स्वेलिंग है, हाँ, वो रीग्रो बाद में तो नहीं करेगा? नहीं, कुछ भी कहीं पे भी रीग्रो नहीं होगा. वो रीग्रो का ग्रोथ का टाइम इनका खत्म हो गया, तो रीग्रो नहीं होना चाहिए. आपने कहा कि रिस्क तो है, वो kind of risk is there? Okay, the main risks, no madam, is hemangioma. There can be lot of bleeding, so we have to keep enough blood with us, that if there is bleeding we'll have to substitute the bleeding. This is the main risk. Second risk that can happen with these kind of surgeries is infection, because lot of work will be done from inside the mouth, and oral hygiene, all that will be a problem because bleeding will happen. So some patients know, that's why we keep you for 2 weeks to make sure we tide over the risk and then send you. We have probably done, I have in my time done like not hundreds but more than that. So you don't worry about those kind of any untoward things happening with anesthesia or something. We have a very good team. But when you are doing a major surgery, just like how you take a plane, there is a small risk, right? That risk is there, inherent to these kind of surgeries. But do you want to take that risk and do the surgery? Absolutely, because it's still going to be ASA grade 1 only, not a high risk thing. That's the kind of risk I'm saying. Because for example, if somebody comes for rhinoplasty, their risk is very minimal. क्या है, कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा इन्फेक्शन कभी हो जाता है, बस रेयरली. अब इस पे बात अलग है थोड़ा, because lot of blood is there, lot of work is there, extension,
So maybe 100 stitches, no, more stitches will come, layers. So the chances of ये वो रह सकता है थोड़ा, इसलिए मैं आपको फर्स्ट ही 12 डेज बोल रहा हूँ. और जो भी मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ये सब सर्जरी के बाद ही दे रहा हूँ. तो सर्जरी से पहले भी आपको 1-2 दिन लग जाएंगे. मतलब पहले स्कैन करने के बाद ही मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मतलब कितना टाइम. अभी मेरे अंदर से 5 आवर्स शायद 4 to 6 आवर्स लगेंगे सर्जरी का. लेकिन मतलब कैसा प्लान जो मेरा होगा ना स्कैन के बाद मैं प्लान करूँगा पूरा डिटेल. बट स्कैन आपको अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते हो. सर्जरी करवाना चाहते हो तो स्कैन निकाल के हम प्रोसीड कर सकते हैं. 6 महीने के बाद अगर आपको सर्जरी कराना तो तब भी स्कैन करा सकते हो. मेरे को सर्जरी के लिए स्कैन चाहिए. So everything will be done here. I mean, Everything will be done here. scan will be done here. Yes. We are planning for February and March. Then you can come at that time. Don't do anything now. Because if you do scan now, again I will ask you for a scan at that time. आपका खर्चा वेस्ट होगा. I need scan only for surgery. Diagnosis I know. I've seen a lot of videos on YouTube. It says Yeah, don't worry. This will take care. We do lots of complicated hemangioma. That baby that you just saw also, I mean, those are all like 100 times more difficult than this. So don't worry about this. February is okay. Take appointment and come, but now only you can book the appointment. Appointment on WhatsApp. I think. No, now you have come here, no more WhatsApp. Directly contact these people and landline number. That WhatsApp number is very busy, it's very chaotic. Please, now you have come, you don't need that number anymore. Directly you contact them. I'll write the details. Currently he is taking and propanol 40 because इसका जो See, pulse है it is See, that we will not control. I am not a specialist for BP. That you will have to manage, and our physician and anesthesiologist will take care of you of that part. I will not say anything on that. Only surgical thing I'm saying that they will do. It's not that it's going to have anything. So be here that they'll continue. They'll manage it. he's also doing a lot of sneezing, snoring. Because he poor fellow doesn't have space in the airway. That will reduce after surgery. Because the tongue is sitting there fully, which is this big with blood. Obviously he'll have snoring. That should reduce after surgery or disappear after surgery. So tongue will be fine, absolutely fine. Everything should be fine. Thank you so much, sir. You're welcome. So I'll write the details, then you can go meet my staff and they'll tell you the process for the surgery, okay? Yeah.